Welcome all. Welcome. Start the session of the today. Hope you like, and let's start it. So, okay, as discussed, we know to discuss the communication skills. The agenda of the today's session is about to know what is communication, how we can communicate with each other. Means one person से another person से हम किस तरह से बातचीत करते हैं, क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है, क्या बैरियर्स होते हैं. We can discuss all over in the today session, and we can also give some tips how to improve your communication. Communication flows towards building better professional relationship. So the objective of the today session is improve your ability to communicate better within the organization. Organization may be your school, college, or your company. It helps to better become a better communicator. How you will become a better communicator. So at the end of the video, you are able to communicate better, and based on the situation, you are able to cope up with that situation. Communicate with the clarity and the clear successful. Your communication will be not bonded and not the breaking by the barriers of the communication. So, what is communication? What is communication? You can think about in your mind at that time. अभी आप सोच सकते हो कि communication है क्या? What makes communication successful? Communication को क्या चीज़ successful बनाती है? And what are the various channel? कौन कौन से channels होते हैं communication में, business communication में, जिससे communication pass होता है? Like we are here, we are communicate within a video conferencing. Sometimes we are communicate over the phone, message, chat, WhatsApp, Messenger, social media. All are the communication platforms for us. Communication is not only verbally, we can be communicate with the gesture, posture, with the body language. So communication should be do in a different way. At the starting, communication is derived from the Latin word communis and communicare, which means to share the information, ideas, thought, to exchange information between two or more person. Communication is not only in a single way. Always we have to communicate with someone with another person. So communication, according to the definition from the Google, it's a noun, communication. You can pronunciate the word as communication. The act of sharing or exchanging the information, ideas, feeling is known as communication. And the next, the method that are used for traveling to and from one place for sending message. That means traveling of ideas and views or your feelings information is known as the communication. In the remote areas, here are written radio is only the means of communication. Now there is a lot of means of communication we have in the today era or today generation. From Brent Tracy, define a communication is a skill that you can learn. It's a like riding or a bicycle or typing. If you are willing to work at it, you can rapidly move the quality of every part of your life. So it should be defined by Brent Tracy about the communication. Okay, so here is a person who is a sender. Like in this video conferencing, in this session, I am a sender. I am sharing my information about the communication with you over this video. So whatever I am sharing, you are receiving it. So you are a receiver and I am a sender. So what the channel we are using? We are using a channel of video conferencing of a video through a video you are learning. So here in this model, a person is sending some message and another person is receiving. So one person is the sender who sent the message and the receiver who received the message. If the message is broken in some way from the noise,
or from other barriers. Maybe you are not presenting in the mood of listening to me. So the message should be not giving in a proper way. I just repeat the word apple and you are getting apple. So that's maybe because of the noise. Sometimes like when we are in a phone, so कभी कभी नॉइस आता है तो हमारा जो भी थॉट्स होता है तो हम वी आर स्पीकिंग लाइक या दिस इज वन हेलो 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 लाइक हम अपना मैसेज देते हैं बट सामने वाले को उसका मैसेज बिकॉज ऑफ नॉइस और सम डिस्ट्रैक्शन की वजह से नहीं समझ में आता है कि हमारा मैसेज क्या है. सो इट इज़ अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. फिर फीडबैक आता है. अगर मैसेज सही तरीके से जाता है, इफ़ यू आर सेइंग हाय, सामने वाले को मिल गया योर आपका मैसेज हाय, देन वो आपको रिप्लाई करेगा, रिप्लाई हाय हेलो. सो दैट्स इज अ फीडबैक ऑफ द मैसेज. अगर आपको उसका रिप्लाई आता है, दैट्स मीन्स योर मैसेज विल बी सक्सेसफुली डिलीवर्ड. सो अ चैनल विल बी यूज. अगर हम मैसेज थ्रू अ टेक्स्ट करते हैं तो दिस शुड बी अ चैनल. व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं चैनल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते हैं देयर शुड बी एन चैनल. चैनल दिस इज अ मीडियम ऑफ द मैसेज विच वी आर यूजिंग टू यूज. हम कौन सा मीडियम यूज कर रहे हैं अपना मैसेज पास करने के लिए, वो हमारा चैनल कहलाएगा. एंड अ पर्सन हु इज सेंडिंग द मैसेज इज अ सेंडर और हु रिसीव द मैसेज इज अ रिसीवर. For effective communication, uh, we need to a feedback of the receiver. जो भी जिस सोर्स से भी मैसेज भेजा गया है उसके बाद जब रिसीव होगा मैसेज, देन अ रिसीवर इज गिविंग अ फीडबैक. लाइक अभी जो सेशन चल रहा है, सेशन खत्म होने के बाद यू आर गिविंग सम फीडबैक, यू आर डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड सेइंग समथिंग ओवर द कॉल. हाउ वाज द सेक्शन, यू आर अटेंडिंग द सेक्शन. जिसने नहीं किया वो बोलेगा कि यार कैसा था मुझे भी बताओ. सो इट शुड बी लाइक आप फीडबैक दोगे, या आई लाइक इट, समवन नो आई डोंट लाइक इट, देयर should be much more better than this. So this is our feedback. So according टू द फीडबैक सोर्स कैन बी इम्प्रूविंग. जो भी सोर्स होगा, जो भी सेंडर होगा, वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा फॉर द नेक्स्ट सेशन कि या लास्ट टाइम ये वाला मिस्टेक हुआ था ना, नाउ आई हैव टू इम्प्रूव. वट एवर आई हैव टू बी सेंडिंग द मैसेज, जो भी मैंने मैसेज सेंड किया वो इनकोड हुआ. इनकोड होने के बाद चैनल पे गया, चैनल से डिकोड हुआ, डिकोड होने के बाद रिसिप्ट मतलब जो भी रिसीवर है उसके पास गया. फॉर द सिक्योरिटी पर्पज वी आर यूजिंग चैनल्स ऑल्सो. सो हेयर फीडबैक होता है कॉम्प्लीमेंट. आप किसको कैसा कॉम्प्लीमेंट देते हो, रेटिंग दे सकते हो, स्टार्स में दे सकते हो, लाइक कि या आई लाइक दिस the session. So according to your feedback you can choose which one after the session which would you like to giving for this session, how it was. Creative educator, like I am a creative educator, so you can be click on here. Doubt, I have a doubt destroyer matlab I have a so much doubt and ma'am will clear to all the doubt in this session. Ex- Excellent communication. So is there through any no barriers, the communication is very effective and in a fluent way. Subject genius, so you can also giving yeah he is a mastery on his subject and it's a subject genius. Motivational guru, I am very motivated after this session, so you can choose motivational guru. Super friendly, according to the session you can choose yes this is a friendly session maybe. वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत स्ट्रिक्ट, थोड़ा सा डिसिप्लिन वाला सेशन था. एंड एन ऑनलाइन एक्सपर्ट, ऑल द थिंग्स आर गोइंग फाइन, इट वाज एन ऑनलाइन वन. Online expert, that means the tools we are using is an effective way. Okay, next come to communication channel. So a communication channel we are seeing here are means to passing the message from a sender to the receiver. Sender से receiver के लिए जो हम मैसेज पास करेंगे उसके लिए एक चैनल यूज होगा, उसी को हम कम्युनिकेशन चैनल बोलेंगे. Determining the most appropriate channel of communication is most important to the effectiveness and successful of communication. So जो भी हमारा चैनल होगा उसके थ्रू हमारा कम्युनिकेशन भी डिपेंड करेगा कि कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है. A channel can be oral or written. चैनल
ओरल भी हो सकता है, ओरल जस्ट लाइक वट एवर इज गोइंग ऑन हेयर, और यूर means video conferencing online, all things are oral. And you can say written, we are, if we are doing chit chat or typing a message or reading some mail, writing up a call. So channel can be richest and leanest also. Richest channel are the most interactive and foster two-way communication. Always, a communication is in a two-way have the richest communication. फेस टू फेस मीटिंग, अगर आप किसी से सामने बैठ के बात करते हो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है rather than a phone call or a voice message. In person communication, online meeting, video conferencing, this one should be called if you person meet the person personally. Leanest channel are presented just fact and does not allow immediate interaction. So if you are doing phone call, voice messages, report, blog, voucher, email, then phone text, you are not meet the person personally, not meet the person by face. So it should become at a leanest way. So which channel we are using to consider some situation here to passes your message. Who are your audience and what will their reaction to your message? हमारा ऑडियंस कौन सा है, मतलब विच टाइप ऑफ ऑडियंस वी आर टेकिंग, इफ वी टेक ऑडियंस एज अ चिल्ड्रन, अगर हम छोटे छोटे बच्चों को ऑडियंस लेते हैं तो वी नीड टू बी प्रेजेंटिंग समथिंग इंफॉर्मेटिव, अगर हमें उन्हें कुछ बताना है तो कुछ कार्टून वगैरह, कुछ इंटरेक्टिव वीडियोस वगैरह बता के, इफ वी आर प्रेजेंटिंग थ्योरी, अगर हम उनके सामने सिर्फ थ्योरी थ्योरी बता देंगे, दे गेटिंग बोर्ड एंड मे बी सम ऑफ देम आर स्लीपिंग ऑन दैट वे. So, firstly, we need to consider who are our audience and what were our message will reach to there and what was their feedback. How long will take to convey our message and information? कितना ज़्यादा टाइम लगेगा हमें हमारा मैसेज उन तक कन्वे करने में? How complex is the message? मैसेज कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसको हम कितना सिंपल बना के प्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स. वुड द मैसेज नीड अ परमानेंट रिकॉर्ड, क्या मैसेज को एक परमानेंट रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है? मतलब अगर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सो वी नीड to take and permanent record for companies and organization that should be prior. What is the degree of confidentially of the message? So if the something should be very confidential information है, so उसको हमें कितने सीक्रेट तरीके से प्रेजेंट करना है और उसको कितने सिक्योर तरीके से सेव करके हमें रखना है. What is the cost of communication? So if we communicate, so what the cost will be recommend, like if you are hiring some client from the other resources, other country, that should be make some cost for making to sharing some information. So how much cost will be there if we communicate a message of the meeting and of the meeting of agenda and all the message? So how much cost we need to make and prospected before the agenda of the meeting or the communication channel. Okay, so here is an activity for you to read the situation and decide which channel of the communication would you use. आप कौन सा communication का channel use करेंगे if you are in this situation. Remember, for some message, more than one channel of communication is possible. A manager wants to congratulate one of them of your team member of a work on a recent project. आपके जो मैनेजर हैं वो किसी भी आपकी एक टीम के मेंबर को उसकी प्रोजेक्ट के वर्क के, मतलब ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब, उसमें उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं. सो विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही इज़ यूजिंग. यू वुड लाइक टू डिस्कस अ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट विद द प्रोजेक्ट मैनेजर. आपको अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के लिए कुछ चीज़ डिस्कस करनी है अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ. The company wants to share the Q1 result, like एक appraisal result होता है लास्ट में कि किसका क्या परफॉर्मेंस रहा, उसके लिए कंपनीज शेयर करती है रिजल्ट, वो किस टाइप का कम्युनिकेशन रिकमेंड करेगी. Your team has been doing wonderful work, so your lead think it will be good to talk about the work to others. So if someone will doing good work, appreciate it.
You have recently fallen out with one of your team member on professional matter. You would like to report this to your manager. कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग और कुछ किसी मैटर की वजह से, प्रोफेशनल मैटर की वजह से आपकी एक टीम मेंबर के साथ आपकी लड़ाई हो गई, ये चीज़ आपको अपने मैनेजर को रिपोर्ट करनी है. सो वन ऑन वन इज़ द बेस्ट वे टू रिपोर्ट दिस. द फूड इन द कैफेटेरिया इज़ नॉट क्वालिटेटिव. फूड जो मिलता है कैफेटेरिया में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. सो यू डिसाइडेड टू रिपोर्ट दिस इशू टू द ऑपरेशन टीम. फिर आपने डिसाइड किया कि ये हम इसके लिए इसकी शिकायत करेंगे. Your team would like to plan a weekend gala on the virtual platform. So right now we are not going to anywhere in this COVID. So we are mostly doing planning in a virtual platform, online meeting and all the things. This planning on the weekend. Okay, next. Next come to on communication flow. Communication in an organization involves employee and various functional part of an organization. कभी भी आप किसी भी organization में होते हो या किसी भी organization के part होते हो, तो हमेशा एक hierarchy चलती है. Hierarchy means a flow from downward to the upward, upward to the downward, how we need to communicate with one person. हम direct यहाँ बैठ के पीएम से कांटेक्ट नहीं कर सकते. वी नीड टू फॉलो सम प्रोसीजर. पहले हमें यहाँ पे अपने वार्ड से वार्ड वाले मेंबर, देन नगर पालिका, एंड देन सीएम, then PM. So it's a hierarchy like. So here in the companies also, if you are an employee, then you need to connect with your manager, then senior manager, and then PM as a project manager, and then he will convey the SDM, service delivery manager, and after that, if the problem is so critical, then it will go off with the CEO. So yeah, we cannot directly go with a simple problem to the CEO of a company that yeah, we are getting this problem. Our internet is not working fine. What we can do? So for a general purpose problem, we need to connect with a person in a hierarchy. Downward communication and upward communication, horizontal, diagonal, external. We can see another slide. So here, uh, is an example. Board of directors are the superior here, and inferior as workers, and above the workers there are the departmental managers. So you can see here some arrows. Get me a pointer. Okay, so here if workers will be complaining with the department manager, then it should be a upward communication. And if department manager will be communicate with the worker, that should be a downward communication. The same here, if departmental manager will communicate to the board of directors, that should be an upward. And if board of director will be passing some message, passing some information to the departmental manager, there should be a downward communication. If departmental manager are organizing some meeting with each other, and this should be a lateral communication. And if worker should directly connect with another department manager, there should be a diagonal communication. Basic differences on upward communication and downward communication. Direction: upward for lower label to higher, downward higher to lower, means the direction of label. Nature: non-directive and non-authoritative. Authoritative. Purpose: to provide feedback, means if we want to provide the feedback, we need to do upward communication. Next. कौन है ये? Okay, done. Okay. Purpose for upward communication: to provide feedback. Purpose for downward communication: to things get done. In the form of report, complaint, and suggestion, we can find the feedback in the upward communication. And if from the higher level they are giving some order, instruction, circular for us, that should be downward communication. So here, as we see, upward.
downward, horizontal, diagonal, external communication. For a communication flow diagram, now the topic is barriers to effective communication. I hope you are all learning and getting the point which we are discussing here. Okay, so barrier to effective communications कि कौन कौन से barriers आते हैं effective communications में? Time. On the same time, I will just deliver a message in the morning that the class is started in the morning at 9 a.m. Okay, but you are due to poor connectivity of internet or maybe your balance is not recharged, you are getting the message at 12 p.m. that the class will be at 9. So the time will be the time will be affect the communication. So if the message will be delay, I will just say will be arrive at 5 minutes and your watch is 5 minutes late and then you see, oh no, I will be late. So the effective of the communication should be affected by the time. Language. Okay. So here we are using Hindi and English both. But when someone will come from Spanish or Latin or they are coming from US, America, from different countries. So they are only knew their own language or English. If you do not know English or only you know Hindi or you're basically your regional language, then come language is the barrier. Okay, so you are not able to communicate with that people. If you want to ask how from where you are or from for the purpose they are coming to India, so it is the communication barrier. Okay, language is the communication barrier for you and them people. Noise. If you are talking and there should be a construction going on, description, destruction, always noise, something will be playing music, a loud music when you are delivering some session or you are reading, you are writing, you are thinking. So noise should also affect if you are calling with some your friend and at that time कोई शादी वाली बारात वगैरह निकले तो उस टाइम जो उसका आवाज आता है उससे नॉइस आता है तो क्या बोलते हैं अरे भाई अभी आवाज नहीं आ रही है थोड़ी देर बाद बात करते हैं सो नॉइस इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्टेड योर कम्युनिकेशन जो आपके आप एक दूसरे से बात कर रहे थे उसको वो बात बीच में रुक गई बिकॉज ऑफ नॉइस सो इसने क्या किया कम्युनिकेशन को इफेक्ट किया डिस्ट्रैक्शन अब बात यहाँ कर रहे हैं पर मन नहीं लग रहा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं टीवी चल रही है मूवी चल रही है तो क्या होता है डिस्ट्रैक्ट हो गए वी वॉन्ट टू सी सम मतलब वी वॉन्ट टू वॉच द मूवी हमें ये मतलब बात नहीं करनी है हमें कुछ और काम करना है या फिर पता चला कल टेस्ट है सो एक प्रेशर हो जाता है लाइक कि यार टुमारो इज माई टेस्ट अरे बात नहीं बात कल बात करते हैं आज मेरा टेस्ट है इट शुड बी लाइक डिस्ट्रैक्शन पुट डाउन्स lack of इंटरेस्ट नहीं है disability disability that means कि you are not able like you are feeling so बीमार सा कुछ फील हो रहा है अनहेल्थी फील हो रहा है तो भी आपका बात करने की इच्छा नहीं होती आपकी किसी से बोलते ना हमें आज किसी से बात नहीं करनी वी डू नॉट वांट टू कम्युनिकेट विद एनीवन वी डू नॉट वांट टू टॉक टू एनीवन डिस्कम्फर्ट हर किसी से मतलब कंफर्टेबल नहीं होता है बात करना लाइक कि इफ़ यू आर जस्ट सिटिंग विद अ पर्सन हु इज़ oppositely talking to you like you are talking but he is not listening you properly or he is talking in another topic you are not interested on that topic it is also affected the communication distance distance is a major source if I am at a distance, very far distance, and like keep shouting, and you are apart from 100 to 500 meters from me, and still you are not, I am not audible to you. So distance is making also a barrier of communication. Too many questions. Sometimes the people get irritated by elders pupil when they are asking, okay बेटा कैसे हो कहाँ थे क्या कर रहे हो अब क्या बस they are not listening to our answers they just want many questions asking just in a fluent way and we are just got it मम्मा इन आंटी को मत बुलाया करो बहुत क्वेश्चन पूछती हैं so we are also getting irritated by the too many questions
other people. So sometime when we meet new people, we are not very frequently able to spoke them. Like we are not able to speak them with the people very fluent. Like if we know a person in a very since a long time, so it's very easy to be able to speak with them. But if a new person will came and वो बहुत चिपकू टाइप का उन्होंने अच्छा हर चीज़ पूछ लेंगे, so we are not feeling very comfortable. Some people will be depending on the nature of the pupil. So these are all the factor which affect, or you can say which is a barrier in the communication. Which one? Time, language, noise, distraction, put downs, lack of interest, disability, discomfortable with the topic, means we are not interested in the topic, distance, too many question, other pupil. Okay, I think you got it. Next, communication flow, as we also discussed communication flow in a downward communication, some useful tips for you. When we are at receiving end of downward communication, जब भी हम कोई भी मैसेज रिसीव करते हैं downward communication, that means you are a employee of the company, ensure you understand every message clearly. तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जो भी मैसेज आप तक सर्कुलेट किया गया है आप उसको बहुत अच्छे से समझो. If you do not seek immediately clarification, अगर आपको नहीं समझ में आता है, so you can be asked with someone. Okay, so be polite when responding to mails and messages. हमेशा ध्यान रखो कभी भी जल्दबाजी में कुछ भी मैसेज या मेल का रिप्लाई नहीं दो. और या फिर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो तब भी आपको ध्यान रखना चाहिए. यू डू नॉट बी रिप्लाई इन अ aggressive way. Okay, so be polite, always be polite. Be, it's important that you acknowledge the receipt of the mail. Okay, जब भी आपको कोई ईमेल मिले या मैसेज मिले तो हमेशा उस पे कुछ ना कुछ आंसर करो. लाइक सो किसी ने आपको हाय भेजा तो आप उसको हेलो भेज दो. सो दैट्स मीन्स यू आर रिस्पॉन्डिंग, you want to be communicate with that person. In the outward communication, a large part of your life is consumed by work. Okay, when you came in the phase of work, आप बहुत सारा काम करते हो. In this, a considerable amount of time is spent in communicating with your manager, boss. Here are some tips. तो जब काम करते हो तो आपको अपनी higher authorities से communicate करना पड़ता है. So we are giving some tips to communicate with higher authority, means your manager or boss. First, when talking to your manager, think ahead and offer solution. Maybe जब भी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम या इशू होगा, so if we have an a solution, हमारे पास कोई solution है, so we need to offer, हमें उसको उन्हें बताना चाहिए. We are offering a solution to the problem or the situation which are discussing about. Think practically and offer suggestion that produce result. हमेशा थोड़ा सा उसके बारे में सोचो, स्टडी करो what the fact and the real solution of that problem. ऐसा नहीं कि बस जो भी आया दिमाग में और तुरंत बोल दिया. You need to think and before produce the result, you need to think what the effect and advantage and disadvantage of that solution which you are providing. If you do not look good, your boss doesn't look. Say Elizabeth Friedman ने बोला in her book Walk 101, learning the ropes of the workplace without hanging yourself. So it means you are not to be looked by only your face and your external beauty. It should be because of your passionate about your qualities. Okay, communicate on a personal level. Okay, you can communicate if the personal situation should be, you need to communicate. Be open to feedback and ask for it. हमेशा feedback के लिए तैयार रहो. Always be asking someone how was that, कैसा रहा, कैसा सेशन था और क्या आपने सीखा, कैसा लगा. So we always be open to feedback. और हमेशा सबको फीडबैक भी देते रहो इफ़ दे आर आस्किंग. हमेशा नहीं, बुराई वाला नहीं, पॉजिटिव फीडबैक इज ऑलवेज इम्पैक्ट.
Workplace is all about completing task on timely effect, so be accountable. हमेशा जो भी आपको टास्क असाइन हो, जो भी आप काम करो, असाइनमेंट हो, एग्जाम्स का टाइम टेबल जो भी शेड्यूल हो और प्रैक्टिकल्स की फाइल वगैरह, वो हमेशा from the beginning to the school life and from till the work life, you have a lot of tasks. You need to complete all the tasks on time. Okay, so we you should be accountable the task in a proper time and in a effective way. Communicating with your peers, that means your friend, can be at time be challenging. सो अपने जो साथ वाले हैं फ्रेंड्स हैं तो कभी कभी जैसे स्टूडेंट्स को टास्क मिलता है असाइनमेंट के, कोई बच्चा पहले कर लेता है, कोई बाद में करता है, कोई कॉपी पहले कंप्लीट करके चेक करा लेता है, कोई बाद में कराता है। सो इट में भी अपन बहुत से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छा तुम्हारा असाइनमेंट बन गया, नाउ यू कैन सेंड मी। सो फॉर दिस वन हमारा जो रिलेशनशिप होना चाहिए हमारे फ्रेंड्स के साथ वो होना चाहिए रिस्पेक्टेड, हमें उनका ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपकी नहीं बनेगी तो वो अपना असाइनमेंट भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा। अगर अच्छा गुड फ्रेंड होगा आपका, सो ही विल शेयरिंग, ओके भाई मैंने अपना बना लिया, लो तुम भी अपना बना लो। तो सम यूजफुल टिप्स, हम यहाँ पे कुछ टिप्स देखते हैं। रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, हमेशा दूसरों की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो। अंडरस्टैंड अदर्स कम्युनिकेशन स्टाइल, ज़रूरी नहीं है सबका कम्युनिकेशन स्टाइल एक जैसा हो। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें उनको समझना चाहिए कि व्हाट द वे दे हैव टू डिस्क्राइब द थिंग्स। सो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है, हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। वी आर लर्निंग फ्रॉम दैट एंड वी कैन बी अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। यूज अप्रोप्रिएट टोन टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, हमेशा जो भी आपका टोन है दैट शुड बी इन अ पोलाइट वे। आप किसी से भी बात करो तो आपके आइडियाज, आप जब शेयर करो अपने थॉट्स एंड आइडियाज, वो हमेशा पोलाइट टोन में होना चाहिए। डू नॉट अलाउ योर पर्सनल prejudice कम अवर वे, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि कभी आप कोई भी सब्जेक्ट मैटर टॉपिक डिस्कस कर रहे हो इम्पोर्टेंट, और आप अपने पर्सनल व्यूज घुसाने लगो, अरे यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बी एम्पैथिक, कमिट टू बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप, हमेशा अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बिल्डअप करो, दैट शुड बी बिकम फॉर बेनिफिशियल इन योर लॉन्ग टर्म लाइफ। रिमेंबर ऑल ऑफ योर वर्क टुवर्ड अचीविंग अ कॉमन गोल, हमेशा अपना एक गोल डिसाइड करो, दैट शुड बी इन अ स्मार्ट वे, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंटेबल एंड रिलायबल ऑन टाइम। ओके, सो यू नीड टू be achieve your goal, and all of your work toward achieving your goal is very important. Now we again see some effective communication, how you can do effective communication. Okay, so communication should always be do quick in solving problem. If someone will be sharing some problem with you, अगर आपके साथ कोई भी अपना problem share करते हैं, that yeah Ayushi, I am facing this kind of problem. So if you have the answer, you are able to solve his or her problem. If you are doing, then that should be effective communication. Firstly, you need to listen the problem of the others and then you decide it. स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, हमेशा अपना जो भी डिसीजन है, जो भी आप अपने लक्ष्य गोल को अटेम्प्ट करने के लिए डिसीजन लो, उसको स्ट्रांगली यू नीड टू पुश अप एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट। मोर प्रोडक्टिविटी, हमेशा कल से ज़्यादा आज जो आपने अचीव किया उसको और आगे बढ़ाओ, दैट या आई कैन डू मोर। कंसिस्टेंस इन द वर्क फ्लो, हमेशा लगातार अपना जो फ्लो है वर्क करने का उसको आप इंक्रीज करते रहो। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशन, सो यू नीड टू बी आपका जो भी रिलेशनशिप है उसको आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाओ, दैट शुड नॉट बी आज दोस्ती है कल तोड़ दी और फिर दैट अनदर डे यू कैन अगेन बिल्ड, यू नीड टू बी बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप with your if communication. Better control, okay, so you can control your relationship at a particular timeline or things that yes it is in a limited way, or you can like communication should also always be broken if you are talking unused or a thing that is not fruitfulness for the others, so maybe that should be attended the breaking of communication.
advanced professional image, better response from all the stakeholders. That should be for the business purposes on the effective communication or always use in the business or in an organization. Seven C's of communication. Clarity. You should always be clear. क्या हुआ? क्या कह रही? हमें नहीं समझ में आ रहा. Seven C's of communication. Okay. Clarity. Clarity in your sentence, in your voice. Cons Conciseness. Conciseness, that means the impact, whatever in your sentence, your words. Always use correctness. The correctness sentence, your message should be correct. Whatever you want to deliver to the person, that should be in a correct. Coherence, the message quality of should be not too lengthy. That should be complete. And courtesy, the message should be provided the correct information in a fluent way in the time in a correct time. And concrete, that should be your message should be clear to the person who are receiving that one. So all the seven C's is very important in the communication when you are attentive and effective communication. Clear, correct, complete, concrete, concise, consideration, and courteous. Okay. To be a good conversationalist, what the point you need to do? Be courteous. हमेशा विनम्र रहिए. Always be polite. Think before you speak. Whenever you speak, you need to think what you want to speak. Be flexible, be cheerful and good humor. हमेशा चेहरे पे मुस्कान लेके और हमेशा एक जॉयफुल नेचर आपका रहना चाहिए जब भी आप किसी से बात करें. बी इंटरेस्टेड इन द अदर फेलो. ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ हमें अपना अपना बस सुनाना है कि यार देख मेरे साथ ये हो. वी नीड टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. And what as we considered the do's, and now it's time for don'ts. क्या क्या नहीं होना चाहिए फॉर अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट? डोंट बी आर्ग्यूमेंटेटिव. हमेशा विरोधी नहीं होना चाहिए कि लाइक आई डोंट लाइक योर ओपिनियन, आई एम नॉट एग्री विथ योर पॉइंट. डोंट बी इनसिंसियर. कभी भी इनसिंसियर नहीं होना चाहिए. डॉगमेटिक, दैट्स मीन्स कि आप हमेशा से बहसबाजी के लिए खड़े हो कि कहते हैं ना कि कुछ लोग से बात करो so दे आर जस्ट ओनली वांट टू आपका जो भी बात होगा उसको काटेंगे, उसको उसको अपोजिट बोलेंगे. दे आर ऑलवेज सीइंग द नेगेटिव साइड ऑफ द पॉइंट. डोंट बी इगोइस्टिक. बहुत ज़्यादा ईगो में नहीं रहना चाहिए. डोंट बी मम्बलर. कुछ बड़बड़ाने वाले भी होते हैं दैट दे आर थिंकिंग लाइक बड़बड़ कर रहे हैं कि मुझे नहीं पसंद आया ये वो. सो डोंट. दिस इज द बैड कम्युनिकेशन. Or people who are doing this is not a good communicator. They are not liking by any person on that way. When you are speaking or you are giving some speech, never use too much slang. कभी भी गालियों का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए. यूज इट ओनली व्हेन इट लीन वर्गर टू योर टॉकिंग. सिर्फ कभी कभार अगर वो अच्छे वे में यूज होती है और आपके टॉकिंग टोन पे अच्छी लगती हैं तो. एलिमिनेट सुपरफ्लुअस वर्ड्स फ्रॉम योर स्पीच. कभी कभी वो जो आ वाले साउंड आ जाते हैं उनको भी हमें एलिमिनेट करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए. अवॉइड एग्जगरेशन हमें अवॉइड करना चाहिए. दैट्स मीन्स नॉट टू बी टॉकिंग इन अ वल्गर वे in a very superficial word. Stop telling personal experience awkwardly. हमेशा अपने personal experience हर जगह नहीं बताना चाहिए if it's not required. Concentrate on these points and you will find that your conversation is most effective and impressive. अगर आप ये points को concentrate होके अपने communication में लाएंगे, then you are a good communicator. Be a good listener. हमेशा आपको अगर गुड कम्युनिकेटर बनना है सो यू नीड टू बी अ गुड लिसनर. लिसनर, हाउ कैन यू लिसन? लिसन टू बी साइलेंटली. अगर आप चुपचाप ध्यान से साइलेंट होके मौन होके किसी चीज़ को सुनते हैं समझते हैं, दैट शुड बी अ काइंड ऑफ अ गुड लिसनर.
बी फ्रेंडली बट नॉट फैमिलियर, हमेशा नेचर आपका फ्रेंडली होना चाहिए बट फैमिलियर नहीं। चेक अप योर वॉइस एंड योर फेशियल एक्सप्रेशन, हमेशा अपनी वॉइस की टोन को चेक करें और आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है। ऐसा ना हो कि बस चेहरा रूठा रूठा बना हुआ है और वॉइस एकदम से रोती रोती वाली, वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अवॉइड एनी इरेगुलरिटीज इन योर बिहेवियर, कुछ हमारे बिहेवियर्स में इरेगुलरिटीज होती हैं जो काफ़ी लोग बोलते हैं दैट इज़ नॉट सूट इन योर बिहेवियर, यू कैन गेट एंड मिनिमाइज दैट irregularities. Avoid try to improve your speaking skills. हमेशा ट्राई करो कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स improve हो. So how can you improve your English or improve your speaking skills? First, think in English. जो भी है आप हमेशा इंग्लिश में सोचो। अवॉइड कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक, हमेशा कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं कॉमन, वी कैन minimize or remove those mistakes. Most important phrases, कुछ phrases हैं वो हम learn कर सकते हैं, we can use in our sentences. Improve confidence, you can improve confidence whenever you are talking or whenever you are delivering some speech or whenever you are talking in English. Listen and repeat, हमेशा सुने और उसको दोहराएं। टॉक टू योरसेल्फ, हमेशा अपने आप से बातें करें क्योंकि वी आर अ पर्सन हु कैन नो बेटर टू आवर सेल्फ, आपसे ज़्यादा आपको और कोई नहीं जान सकता, सो यू नीड टू टॉक टू योरसेल्फ। वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन, अपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, like कि what the right pronunciation of that word and what are you speaking, you can change that word by repeating word again and again. Record yourself, you can record yourself what and minimize your realize your fault and then minimize that one. Try some tongue twister, हमेशा कुछ ना कुछ tongue twister कुछ sentences होते हैं उनको आप try करें, that should be improve your sentences reading in a effective way, in a fluent way. Call customer care, you can call customer care for improving your sentences, or talking to customer care will be improve your communication as well. Voice or video call to a friend, you can call to your friend over the voice or video call, that will help to you. Focus on fluency, not grammar. When speaking, you always need to focus on fluency, not grammar. So you always need to focus on the fluency. If you are speaking, that's not matter you're grammatically correct or this is one is a grammatical mistake. You always try to be in a fluent in a way. Improve vocabulary, always enrich your vocab and add some new words on your dictionary as well. So that should be improve your vocabulary as well. Learn basic of tenses. टेंसेस के जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको आप ध्यान रखिए, एंड यू कैन बी एबल टू बिल्ड अप द न्यू सेंटेंसेस एंड देन कन्वर्सेशन एंड डायलॉग, हमेशा किसी से कोई छोटा मोटा कन्वर्सेशन आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐप वगैरह होते हैं जिसमें you can make a scenario, the conversation scenario, what happened when we are in a classroom, when we are at a home, and what is the situation here, and what the sentence we need to speak. Okay, so here the tips and trick will help you to improve your English. Now, for some more tips, बी रियलिस्टिक अबाउट योर इंग्लिश लर्निंग गोल, हमेशा आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, आपका जो नेटिव टोन है स्पीकिंग का इंग्लिश का, वो अ, उसको आप समझें। यू कैन नॉट बी लाइक वांट टू बी लर्निंग एज ऑफ द नेटिव स्पीकर ऑफ यूएस, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट उस टाइप का है, यू आर नॉट यू आर एबल टू स्पोक लाइक that person, but not at the starting time, on its starting phase. I want to be like on the way what they are speaking. So you need to take a time, your time, and then you are able to do. Practice speaking as well. Okay, so always be realistic about your English learning goals.
प्रैक्टिस स्पीकिंग एज वेल एज नॉट जस्ट रीडिंग एंड लिसनिंग। हमेशा बोलने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते पढ़ते और आप सुनते सुनते आप सोचोगे कि बोलना आ जाएगा। यू ऑलवेज नीड टू बी स्पोक, यू ऑलवेज नीड टू बी स्पोक। A little sentence and the little word phrases and the big sentence will help you. Practice speaking English whenever you get a chance. कभी भी आपको चांस मिले, you need to speaking and you need to practice of speaking. Get native is English speaking friends and practice speak with them. अपने कुछ friends को के साथ भी आप practice कर सकते हैं. Then you can speak with your native friends. Don't be afraid of making mistake. कभी भी आपको डरना नहीं है कि like I am doing that kind of this, mistake and what happened? What maybe happened actually? At last, nothing. You can correct your mistake and then learn from that one. यूज सिंपल सेंटेंसेस एट फर्स्ट। सबसे पहले आप छोटे छोटे सेंटेंस से स्टार्ट करें, देन प्रोग्रेस टू मेक मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। फिर आप अपना प्रोग्रेस इंक्रीज कर सकते हैं और सेंटेंस को मोर कॉम्प्लेक्स तरीके से बना के बोल भी सकते हैं। मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, ऑलवेज बी टेक एंड थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। एंड ऑलवेज ट्राइंग सेइंग समथिंग एक्स्ट्रा। हमेशा सिर्फ यस या नो में आंसर नहीं देना है। यू नीड टू बी yes, I have another option, another topic for discussing more। अपना conversation बढ़ाने के लिए आपको हमेशा trying to be something extra, not only communicate with yes or no, okay, with an ideologist types. So this is all the tips and trick we have discussed over this session. I hope you like. Now this is a quiz time. So you can write the answer in the comment box or in the chat box. Communication is a part of skill. Blank skill. Which one? Hard, soft, rough, and short. The right answer you can write in the comment section, and we can give the next answer in the next video or in the next session. Second, blank. Communication include tone of the voice, body, language, facial expression, etc. ओके, सो किस टाइप का कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है? टोन ऑफ द वॉइस, वॉइस की टोन, आपकी जो आवाज़ है उसकी टोन, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, लेटर और नोटिस। ए बी सी डी, ए बी सी डी, यू कैन राइट द फुल आंसर। ए नॉन वर्बल, बी वर्बल, सी लेटर और डी नोटिस। चारों में से जो एक होगा। Now come to the third question, third quiz question. The response to a sender message is called। So जो response मिलता है sender message के through उसको क्या बोलते हैं? Feedback, channel, message or noise. So A, B, C, D. Right answer give in the comment section or the chat box. Thank you for attending this session. I hope you like it, enjoy it, and learning something will grow, increasing in your knowledge. And you can also be give your feedback in the comment section for my compliments. I always be appreciate your comments, and thank you for attending this session and give your time. Have a nice day. Thank you. Stay safe, stay home.